Good afternoon, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma, and I hope all of you are doing really good today. Am I clearly visible and audible to everybody in the app and on YouTube as well? Can you guys hear and see me clearly? If you could just confirm it. Oh, what's happening? Yes. Am I clearly visible and audible? Hi, Vishal, Shivangi, Preeti, Moviz. Am I clearly visible and audible? Clearly visible? Yes, clearly visible and audible. All right, so guys, yet another session on strong and weak arguments. This is part 3 of it. We've already done with 2 parts. You've solved so many questions with me where we understood how to address these questions. What's the methodology that we should be using? But before I start off with the third class in the series today, I'll have to take you through a few things. If you're targeting CUCET for 2022 target year, a champion course has been recently launched. And if you wish to sit for this examination and get into the topmost central universities of our country, enroll yourself at the earliest. Do not wait. This is your path to success. Apart from that, if you're targeting NPAT, SET, GGS, IPU, Christ University, St. Xavier's, if you're targeting these BBA entrance examinations, we have a BBA ranker course that we have launched, and the classes started on 14th of January. तो जितना लेट करोगे उतनी क्लासेस मिस होंगी. आई एम श्योर यू डोंट वांट टू डू दैट. इसीलिए जल्दी से एनरोल कर लो इस कोर्स के लिए और क्लासेस स्टार्ट कर लो अपनी. बट अगर आपको सिर्फ इपमैट और ड्यू जैट टारगेट करना है, these are the 2 examinations that you're targeting, we have a score booster course for you that is going to start on that started rather on 18th of January. You could speak to our counselors on this number to know more about this batch, and but make sure you do it at the earliest because आप classes otherwise miss करोगे. Also, if you want to know if you should be taking IPMAT or CAT if you wish to get into IIMS, what examination should you be taking? We have a session on 21st of January 2 p.m. Bookmark this session. Rohindip ma'am is going to tell you आपको कौन सा एग्जामिनेशन लेना चाहिए अगर आपको IIMS में जाना है तो CAT लेना चाहिए या IPMAT लेना चाहिए. So she'll be talking about all of this these in this session. Also, हमारे चैनल पे हम रोज we bring a lot of free sessions for you. Every day at 4 p.m. we bring logical reasoning sessions for you by Rohindip ma'am. So ये sessions miss नहीं करना, इसको bookmark कर लो, इसको reminder set कर लो. Every day 4 p.m. Apart from every day 4 p.m. on logical reasoning, every day 2 p.m. we have sessions on GK by Salik sir. तो I'm sure आप ये भी नहीं miss करना चाहोगे. हमारे चैनल पे रोज 4 p.m. is going to be reasoning sessions, and रोज 2 p.m. it's going to be GK sessions, or रोज 11 a.m. we have sessions on quantitative ability by Ankur sir. तो ये सेशंस आपको मिस नहीं करना. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो नो 12:30 अल्पा मैम की भी सेशंस होते हैं. कभी कभी मैम रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाती है, कभी कभी मैम इंग्लिश पढ़ाती है. सो 12:30 मेरे सेशंस एक भी मिस नहीं करना आप लोगों को. यू नो आर lot of brilliant faculties, the best in the industry. We've got Rohindip ma'am, Rabia ma'am, Salik sir, Vinod sir and Ankur sir. तो इन लोगों से पढ़ना है तो एनरोलमेंट करना पड़ेगा. जल्दी से एनरोल कर लो because you don't have a lot of time left for your examinations. Movies कम हो गया है, गया नहीं है, but चला जाएगा. Thank you so much for asking. मैं मॉर्निंग वाली क्लास अटेंड नहीं कर पाई, नेटवर्क इश्यूज. तो आप अपना नेटवर्क ठीक करो बच्चे, आपकी बहुत क्लासेस मिस हो रही है मॉर्निंग वाली. Everyone else, thank you Sham, thank you so much, thank you my child, I'm glad. तो अब जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने अभी तक स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट्स में किया क्या. ओके, सो आलिया वॉच दैट क्लास आफ्टर दिस क्लास एंड्स. ओके ओके, सो अब अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स में क्या किया, हमने क्या मेथोडोलॉजी यूज करी, हम कैसे आंसर करते हैं इन क्वेश्चंस को, ये फिगर आउट करते हैं. ओके, ऑल राइट. तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके पास एक डिबेटेबल टॉपिक होता है, एंड ऑन द डिबेटेबल टॉपिक देयर आर 2 आर्ग्यूमेंट्स गिवन टू यू, and you have to judge the language and the reasoning of each argument, and you have to identify if the language of each argument, the reasoning of each argument is written strongly or is it a weakly put argument.
And one thing that we understood was, in fact, rather two things that we understood was, you have to consider yourself as a judge and you have to identify that the arguments that are written in favor or in opposition of the debatable topic given to you, they are strongly put or not. आप जज हो और लॉयर्स आपके सामने आर्ग्यू कर रहे हैं, दो आर्ग्यूमेंट देके आपको एक एक का आर्ग्यूमेंट. तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था? ईच आर्ग्यूमेंट इज टू बी टेकन इंडिविजुअली, बिकॉज व्हेन यू कंपेयर ईच अदर तो यस और नो तो एक दूसरे को काउंटर करेंगे, एंड वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. जज कभी भी दोनों को कंपेयर लास्ट में करेगा, वो अकेले इंडिविजुअली एक एक का आर्ग्यूमेंट सुनेगा, राइट? तो आप एक जज हो, आपको इंडिविजुअली एक एक आर्ग्यूमेंट चेक करना और देखना है क्या मुझे आर्ग्यूमेंट अच्छे से दिया गया है कि नहीं, या मुझे एक गलत तरीके से आर्ग्यूमेंट दिया गया है. एंड whatever is written in the argument, like in the brackets, is to be considered true. Remember that? So if this argument is true, is it a strongly put one or is it a weakly put one? तो ये मुझे आइडेंटिफाई करना है. ओके? और यस, कभी भी कंपेयर नहीं करना. बिल्कुल करेक्ट. यस, शाम में पैराग्राफ बेस्ड भी करवाऊंगी, बट कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं बहुत टाइम से रीजनिंग की क्लासेस करवा रही हूँ और अब मुझे ना इंग्लिश करवाने का थोड़ा मन कर रहा है. तो आई थिंक मैं नेक्स्ट सीरीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समरी टाइप क्वेश्चंस पे लेके आऊंगी. सो दैट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट सीरीज. वो सीरीज जो 3 क्लासेस की खत्म होगी, उसके बाद आई विल ब्रिंग द पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑन सिमिलर काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्गुमेंट. ओके, कोई बात नहीं मोविस, अभी वाला क्लास पढ़ते हैं. ठीक है, फेयर इनफ. गुड आफ्टरनून एवरीवन हु इज जॉइनिंग मी लेट. ठीक है, सो हमने उसको ट्रू कंसीडर करना एंड देन वी हैव टू सी इफ इट इज स्ट्रांगली पुट और नॉट. अब कौन से आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रांग होते हैं और कौन से आर्ग्यूमेंट्स वीक होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जो एक स्ट्रांग रीजनिंग के साथ होते हैं, राइट? स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, करेक्ट डेटा के साथ बैकअप होते हैं या करेक्ट रीजनिंग के साथ बैकअप होते हैं. क्योंकि अगर वो सिर्फ एक ओपिनियन रह जाते हैं तो वो एक वीक आर्ग्यूमेंट होते हैं. अगर आपने अपने ओपिनियन को दे दिया कि मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, तो जज क्यों सुनेगा आपकी बात? Judge would not listen to you. So only opinions are obviously weak arguments. These opinions, if we have to make it strong, we have to either back it up with the reasoning or some substantial data, authentic data that the judge listens to me. Okay, so opinions are weak arguments, or maybe any argument that compares. Sorry, Vinod sir, I'm hijacking your picture. If it compares, it's going to be a weak argument. आप कुछ करते हो, अगर मैंने आपको किसी और से कंपेयर किया, आपका कंट्री कुछ करता है, आपकी गवर्नमेंट कुछ करती है, अगर मैंने उसको किसी और से कंपेयर किया, वो गलत होगा, because somebody else doing it may have their own reasons of doing it. Does not mean I should also be doing it. That kind of comparison becomes a weak argument. And सबसे important third point that makes a strong argument is desirability. Yes, Nisha, desirability. What is desirability? Desirability is things that most of the people would want, things that most of the people would support. Examples were reduction of diseases, reduction in pollution, maximizing of benefits to people, equality in the society, our economy going up, our GDP going up, our per capita income going up, more benefit to the government that will aid the resources of the country. All of these examples are things that common people would desire. Okay? So those are going to be our strong arguments. So desirability is going to be a very, very strong point. Now, before I take you to questions, let me ask you a personal question. It's not a part of the questions that I've bought. You have to listen to what I say very carefully. Listen to my question, listen to my argument, and then judge it. Okay? So, my question is, should, and there's not going to be any fighting here amongst yourselves. Apna personal opinion nahi dena hai. Okay? So, should reservation in competitive examinations be banned? I don't want your personal opinions. I want an argument. Should reservation in competitive examinations be banned? Okay? So, my first argument here is yes,
it should be banned because it takes away equality from the society. Strong or weak? Yes, it takes away equality from the society. Strong or weak? सोच के बताना ध्यान से. Impulsive नहीं होना है. मैं आपको बार बार बोलती हूँ, critical reasoning में impulsive हो गए तो trap में फंस जाओगे. क्या होगा आंसर? Yes, reservation should be banned because it takes away equality from the society. Strong, 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 weak, weak, weak. So the point is, the argument is weak. But why? Argument weak है. Strong वो लोग बोल रहे हैं जो लोग यहाँ personally देख रहे हैं चीजों को. It's a weak argument. Why is it weak? It's a weak argument, Ramesh. Exactly, Anushka. How? How does it take away equality? Rather, it ensures equality. उन क्लासेस के लिए जो oppressed है, जो backward है, उनको तो वो ensure करती है ना equality. तो ये strong हुआ कैसे? आपने बोल दिया it takes away equality from the society, but how does it do that? Did you back it up with the reasoning और आपने अपना personal opinion बोल दिया कि equality खत्म हो जाएगी सर इससे? अरे भाई कैसे होगी equality खत्म? Reasoning तो दोगे? It rather provides a level playing field, Anushka. I love you, my child. You have an appropriate line of reasoning. Ma'am, because reservation is aimed at providing opportunity to those who are backwards. So rather, it will ensure equality. How does it take away equality? Okay, now, it favors undeserving candidates. Fair enough. But did my argument say that, Zanish, or are you assuming it? My argument only said it takes away equality from the society. That was the only one, right? That yes, reservation should be banned because it takes away equality from the society. How? Give it some reasoning. What you are saying, Zanish, is a reasoning, but my argument does not say that, my child. Do not be fooled by this. Okay? Let me give you another option. No, reservation should not be banned because our ancestors divided our society, and this ensures the uplifting of the downtrodden and ignored. I'll repeat. No, reservation should not be banned because our ancestors divided our society, and ensuring reservation ensures that the downtrodden and minorities are given equal opportunities. अब ये डिजायरेबिलिटी हो जाती है क्योंकि हमें इक्वलिटी लेके आनी है. So अगर इक्वलिटी है की बात हो रही है, everybody would want equality, keeping aside your personal opinion. ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है. ठीक है. Last argument. No, reservation should not be banned because our fundamental right in the Constitution ensures equality to everyone. This reservation ensures that. Strong or weak? Strong or weak? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है. जहां आप लॉ कोट कर देते हो तो फिर जज आप पे आर्ग्यू नहीं कर सकता है, राइट? जहां आप लॉ कोट कर देते हैं, फंडामेंटल राइट्स कोट कर देते हैं, ये सारे लॉज एंड राइट्स, इफ एनीथिंग वायलेट्स दैट,
the judge is going to listen to you. Last two are absolutely strong. Also, I took this example because possibly through this example, I could reduce the amount of unhappiness that were in some of your minds because there were reservations provided to some and not to some. This, according to me, personal opinion, is much needed. But let's not talk about that. Let's come to our first question of the class. जहां लॉस कोट हो गए वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाता है. कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है, क्विकली करेंगे इसको. आज 8 क्वेश्चंस लेके आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, वेरी क्विक, सुप्रीमली इजी. व्हाट्स योर आंसर हियर? So, here, what's your answer? Achha, did you share this video? If you haven't done that yet, why don't you do it ASAP? Do it right away. Tell me that you've shared it. Both? क्योंकि दोनों desirable है. Unanimous answer, both strong. Absolutely. Because both of the things that are mentioned are desirable. Reducing unemployment, desirable. Improving economic condition, desirable. And you know what? Reducing unemployment है, तो improving economic condition तो automatically होगा ही. Actually, A and B are, restating the same thing. Right? Thank you, Janvi, my child. Thank you. So A and B are stating the same thing. Both are going to be strong. Okay, let's move to the next question. Easy. Since there is no argument here, this question. Okay, let's see who gets it. Thank you, Janvi. Thank you, Chorus. Thank you. What's our answer here in question number 2? Thank you. Thank you, Vishal. Thank you, Preeti. Thank you, my children. What's the answer for this question? Thank you, Anushka. Is women empowerment important? A में क्या प्रॉब्लम है? आंसर A भी तो हो सकता है. What is wrong with A? What is wrong with A? पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी ब्रेक हो रही है तो नहीं, ब्रेक नहीं करना. हमको पेट्रियार्कल ही रहना है. हम पेट्रियार्कल रहना चाहते हैं, हमको ब्रेक ही नहीं करना. पेट्रियार्कल सोसाइटी क्यों लेके आ रहे हो एम्पावरमेंट वुमेन का हमारे कंट्री में? ऐसा नहीं ना. पेट्रियार्कल ब्रेक करना तो नेसेसिटी है सोसाइटी की. इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट. वो पता है क्या कह रहा है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट? फर्स्ट इज वीक. इट्स एन ओपिनियन. और प्लस क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है. बोला नहीं नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट करोगे तो पेट्रियार्की खत्म हो जाएगी. तो जो पेट्रियार्की में बिलीव करते हैं ना लोग, वो बोलेंगे नहीं नहीं सर, पेट्रियार्की खत्म हो जाएगी, मत करो वुमेन को एम्पावर. अरे भाई क्यों नहीं करो? पेट्रियार्की तो खत्म करनी है ना. सो तालिबान थोड़ी बनाना है हमको इंडिया में. नो. सो सर ये पेट्रियार्की ब्रेक करेगी, वो तुम्हें बोलेगा मूव आउट ऑफ माय कोड, वी नीड टू ब्रेक द पेट्रियार्की. फर्स्ट इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल. अशावरी यस. Okay, the second one, women can have equal rights. जहां equal rights, equality की बात हो जाती है, it's an absolutely desirable argument. It certainly becomes a very strong one. Okay, so the second argument is strong. Our answer here is B. Okay, where is it? Here. Our argument is only 2. Okay, easy question. Let's move to the next question. Okay, this is also an easy one. Let's do it quickly and then the next few questions are difficult. The next 5 are difficult. Exactly. जब पेट्रियार्कल रहना तो एम्पावरमेंट कैसे करोगे? It's unjust. Okay. अच्छा, I'm moving fast because these questions are easy. I hope you are able to understand these questions. If there's any doubt, you could just ask me then and there. India should increase the production of wheat immediately. Yes, India is facing scarcity of wheat.
and no, India is facing lack of finance. Neither, A, both. Oh, I thought this was easy, but I have varied answers here. Neither. Okay. सबसे पहले मुझे ये बताओ आपके लिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वीक क्यों है? For people who are saying neither, why do you think is the first argument weak? I'd like to know your opinion before I give my explanation here. Why do you think is A weak? If there is a scarcity, should we not increase the production of wheat immediately? So Alia, if both are true, why are both weak? Shouldn't both be strong? सोच के बताओ. Why is A weak for you? बच्चे, अगर स्कैर्सिटी है तो क्या प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना चाहिए? वीट की कमी है जो स्टेपल डाइट है मेरे कंट्री में. इंपोर्ट से बेटर क्या प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं होगा? वापसी. Tanishka, please do not forget the fact that wheat is a staple diet, including India and many other countries. Okay, if it is a staple grain and if there's a scarcity, I have to work on that. There are two methodologies of working on that, either increasing production or importing. Which one of these two should be better? Importing or increasing production? Which one of them is beneficial for us? Which one of them is beneficial for us? Both are going to be benefiting us, but which one is going to benefit us the most? Importing or increasing the production? Think of it. Increasing production. Simple. So A becomes a very strong argument. अगर कमी है फूड ग्रेन की तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी नहीं चाहिए क्या? बताओ. Exactly. स्कैर्सिटी या कमी है, डिमांड से कम है, तो प्रोडक्शन ही तो बढ़ाओगे. First becomes a very strong argument. Let us look at the second one. Should India increase the production of wheat immediately? No, India is facing lack of finance. पैसों की कमी है मेरे पास. One, उसका क्या लेना देना है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट से? टू, अगर उसका लेना देना भी है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट से, should I not focus on abundance of food or rather deal with the scarcity of food because it can lead to starvation? Right? फाइनेंस की कमी है तो भी क्या मुझे ये इंश्योर नहीं करना चाहिए कि फूड ग्रेन्स अबंडेंट हो मेरे कंट्री में? मैं बाकी सोशल सर्विसेज से या बाकी चीजें जहां पैसे लगते हैं वहां से पैसे काटूंगी, बट आई विल स्टिल इंश्योर देयर इज एम्पल ऑफ फूड इन माय कंट्री. राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री. Agreed? Second is a weak argument. Only one is strong. Yes, second is weak. Understood, everyone? Any arguments? And you know what, Preeti, you have a point. अगर वीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा ना तो वो मेरे कंट्री का फाइनेंस को हेल्प ही करेगा, तो लैक ऑफ फाइनेंस का वीट से लेना देना नहीं है. Yes, only one. Okay? चलो इसको ऑल्टर करते, थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्रिकी बनाते हैं. Okay, should India import wheat immediately? अब क्या फर्स्ट स्ट्रॉन्ग होता? थिंक. स्कैर्सिटी का इन्फो नहीं दिया. अच्छा जानवी, यस आई विल एक्सप्लेन. अगर स्कैर्सिटी का इन्फो क्वेश्चन में नहीं दिया और अगर मैं सेकंड आर्ग्यूमेंट को अकेले देखती हूँ ना, तो भी वो एक वीक आर्ग्यूमेंट होगा. क्योंकि अगर मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है वीट का और प्रोडक्शन इंक्रीज करना है उसका मेरी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटस से कोई डिपेंडेंसी नहीं है. ठीक है. दूसरा, फर्स्ट तो आर्ग्यूमेंट अपने आप में स्कैर्सिटी लिख रहा है जिसको मुझे ट्रू मानना है. The first argument is going to be a weak argument.
It's not going to be a strong argument when I make it import. Because अगर scarcity है तो पहला ये देखो कि हमारे पास में कितना बफर है स्टॉक, या फिर क्या इंपोर्ट करना नेसेसरी है कि नहीं. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं. अगर स्केर्सिटी हो रही है तो क्या इंपोर्ट करना जरूरी है इमीडिएटली? पक्का? कन्विंस्ड? कन्विंस्ड? वीक हो गया फर्स्ट वाला कि काउंटर आर्ग्यू करना है? एनीवन? काउंटर आर्ग्यू करना है? Exactly. First is still going to be a strong argument. It's still going to be a strong argument because अगर immediate import चाहिए तो आप ये देखोगे कि आपके पास कितना स्टॉक है. ठीक है, एंड अगर स्कैरसिटी हो रही है तो इंपोर्ट आपके पास इमीडिएट सोल्यूशन तो इंपोर्टिंग ही है. ठीक है, यस, ओके, कन्विंस एवरीवन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Very good question. Think about it carefully. But you know what, Chorus? That production will take time. That production will take time. और अगर immediate scarcity है तो आपको import करना पड़ेगा. समझो इस बात को. Right? Yes. And that is why the first one was strong. चलिए ये question करिए. What's our answer? A. देखो, second is merely an opinion. ये मेरा है, ये मैं ही रखूंगा. सुप्रीम कोर्ट को 1 मिनट लगेगी आपको लाइन पे लाने के लिए. I'll explain this question. Okay, Shruti, this question, right? So basically it says river disputes between states has been a long one, and we've seen so many states fighting for the river water. Okay, there's been a constant fight, and there's been a fight on the Kaveri river water as well. So to avoid this fight between states, should the rivers and the water come under the jurisdiction of the central government and not the state governments? Should that be done? And they should be nationalized rather than depending upon the individual states. So the second one says Kaveri belongs to Tamil Nadu and the center has no right over it. The center has every right over everything that causes dispute in the country. You can't say this is my own states, you can't intervene in it. Even if the state does something wrong, the Supreme Court or the center can straighten it up. Thus, the second argument is merely an opinion and it's a weak argument. Okay? Second, the first argument, nationalization would resolve the crisis of Kaveri. Anything that brings peace to our country, that resolves the crisis, is it a desirable one? Yes or no? If nationalization ensures there is no crisis and there's peace, is it a desirable one? Anushka? Yes, it is. And thus, the answer becomes A. Okay? Our answer here becomes A. Only and only one will follow, that is, one is strong. Let's move to our next question of the class. Here we go. Good question, very good question. Very good question, in fact. You know, Anushka, I'll explain how will it resolve the crisis.
The government, when something is nationalized, the government would ensure that the water is equally distributed. So one state would not suffer because the other state is not willing to share the water with the other state. That is how. Okay? Should the number of courts of law in India be increased? Yes, there has been many cases pending. Pending है क्योंकि obviously judges नहीं है तो कोर्ट का नंबर इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है? अच्छा, ओके. और अनएम्प्लॉयड लॉ ग्रेजुएट्स हैं तो कोर्ट्स बनाओ, बढ़ाओ, उनको जॉब मिलेगी. बहुत स्ट्रांग हो गया. शाबाश. बहुत स्ट्रांग हो गया ना. The answer is neither is strong. Now you have to think why. Neither is strong, my children. Neither. Exactly, तनु. अगर कोर्ट्स में लॉज, कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है तो जजेस का नंबर इंक्रीज करो. कोर्ट बढ़ाने से क्या होगा? दूसरा, अगर लॉ ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ. कोर्ट बढ़ाने से क्या होगा? और वो क्यों वो अनएम्प्लॉयड है? हो सकता है उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है कि उनको जॉब मिल पाए या उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए. तो हो सकता है उनकी एजुकेशन में कमी है, वो एजुकेशन अच्छी करो. बोथ आर वीक. आया समझ में? आई एक्सप्लेन दिस अगेन. नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं. अगर उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ कोर्ट से भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं ना. तो इसका मतलब उनका अनएम्प्लॉयमेंट होना एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ कोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि भर गए कोर्ट्स, अब लॉयर्स की जगह ही नहीं बची इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है. ऐसा तो है नहीं. तो इसका मतलब वो लॉ ग्रेजुएट किसी और कारण से अनएम्प्लॉयड है, नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी बट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. अपॉर्चुनिटीज आर इनफ. और दूसरा, केसेस पेंडिंग है तो जजेस का नंबर बढ़ाओ. प्लस जजेस का नंबर बढ़ाना भी एक गलत असम्पशन. आई एक्सप्लेन व्हाई. हो सकता है नंबर ऑफ जजेस सफिशिएंट है, हो सकता है वो काम नहीं कर रहे हो. दैट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, है ना. तो इसलिए नंबर ऑफ कोर्ट्स क्यों बढ़ाओगे? पहले ये इंश्योर करो कि आपके जजेस फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं. अगर केसेस पेंडिंग है तो, अगर वो फिर भी नहीं कर पा रहे पूरे, तब नंबर ऑफ जजेस बढ़ाओ. कोर्ट्स बढ़ाने का नीड नहीं है. अग्रीड एवरीवन? Agreed? Any questions? Can I move to the next question? सोचा इतना? Can I move to the next question, everybody? Work hour भी बढ़ा सकते हैं, प्रीति. That's also a solution. Okay, let's move to the next question. Easy, very easy. So let's see who gets it correct. डिफिकल्ट है, बिल्कुल है. आज थर्ड क्लास है तो डिफिकल्ट तो लेके आऊंगी थोड़े क्वेश्चंस. Okay. Shiva trilogy written by Amish Tripathi is the best fiction book. Yes, none of the books have 3 parts. Yes, the best fiction book is subjective and always differs from person to person. ये easy है. Unanimous answer आना चाहिए मेरे पास सबका. बिल्कुल. Oh, second is strong. First is weak is the answer. The first one is weak. I'll tell you how. देखो,
किसी और बुक के 3 पार्ट नहीं आए तो क्या 3 पार्ट आना ही उसको बेस्ट बनाता है? नो. A book is best because of the writing style it has, because of the story it has. Making it into 3 parts does not make it best. So the first one is for sure weak. But I say no. For me, Amish Tripaঠি's Shiva trilogy is not the best fiction book, because when you say best, it is a subjective one and it differs from person to person. So for you, it may be best, but for me, it may not be best. Will you listen to my argument that being best is a subjective thing? Will you listen to me? Yes, you would. You would say, हाँ मैम आप सही बोल रहे हो. Best subjective है, क्योंकि best एक adjective है, और adjective तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना. Second is a strong argument. A very strong argument, because best is a subjective thing and it varies from person to person. When it varies from person to person, then how can I call it the best? I can't, right? Okay. Hi Akhilesh, did you try this question out? Okay, got this everybody. Let's move to the next question then. Here we go. Yes, this question. Tricky one, be careful here. Yes, they would, Anushka. They would certainly. Should the court refuse to order suspensions of ban on smoking? Yes. Otherwise, tourism, which is one of the major countries in the country, will be severely affected. Okay. It is a matter of public health, and people who smoke can smoke in private places also. ठीक है? Okay. क्या होगा answer? E means both. ठीक है? Others? B. Okay. D means neither. Okay. And then we have B. And then we have A. Okay, let me explain this question to you. Should the court refuse to order suspensions of ban on smoking on public places? कि public places में smoking होनी चाहिए, ban था, लेकिन क्या ये ban हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए? The first argument, yes, tourism industry effect होगी, और एक बहुत बड़ी industry है ये हमारे country में. Tourism industry का public smoking से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? और अगर health और tourism को compare करोगे, तो फिर किसको priority दोगे? Health को ही दोगे ना. But nonetheless, let's not compare it. Let us not compare it. The first one is weak. Okay. Why is it weak? It is weak because tourism industry does not have to do anything with smoking in public places. If the tourism is impacted, let it be impacted, because if you want to smoke, you can go and smoke in private places also. We are not banning smoking altogether, ताकि tourism impact नहीं हो, क्योंकि कुछ smokers हमारे country में आ सकते हैं बाहर से. Okay, तो ये relatable ही नहीं है actually. Second argument says that no, it's a matter of public health. Public health की बात हो रही है. Public place में आप smoke कर रहे हो, आप लोगों की health को deteriorate कर रहे हो. आपकी health की आपको चिंता नहीं है, private place में कर सकते हो. इसलिए इस ban को मत हटाओ. No, don't remove the ban. Because somebody who wants to smoke can smoke in a private place also. And when you look at the overall public health, public smoking is going to impact the overall public health. जहां health आ जाता है, और आप कंप्लीटली बैन नहीं कर रहे हो, आप एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हो एक स्मोकर को. सो कंप्लीट बैन नहीं है और हेल्थ आ जाता है, ये आर्ग्यूमेंट डिजायरेबल हो जाता है. एंड व्हेन इट इज डिजायरेबल, इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. द आंसर इज बी. यस अनुष्का, एंड यस श्रुति, जानवी, स्नेहा, आलिया, एस्ट्रिक, all are going to be correct. Public health is desirable. Okay? The second one is a strong argument. All right. So, B, and the last question of our class here.
Let's see who gets this one. What's your answer? Okay, Zenish says A. All right. A. D means neither. Okay. A. That means आपको ये तो पता है कि second argument is weak for sure because they earn less. Earning, you know why? It's not even related. The earning of a public figure from something that promotes ill effects, or rather smoking, or maybe any other thing that's not desirable in the society. B is not desirable at all. B is weak. But the first argument, youngsters do what their idols promote, and smoking is injurious to health. तो क्या मैं ये अज्यूम करूंगी कि पब्लिक फिगर्स वो होते हैं जो कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? यस और नो, पहले ये बताओ. कैन आई अज्यूम दैट पब्लिक फिगर, any person who is a public figure, is somebody who can influence people? Yes or no? Yes, yes, yes. Why did I take up that question? Why do you think I took up that question on reservation? Because I knew 50s and hundreds of people are watching me, and I knew I might be able to pacify your mind. And especially youngsters, they do, Ayushi. Why did I take up that question in the class? क्योंकि अगर मैं 1% भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं बोलूं जो एक गलत चीज स्प्रेड करे सोसाइटी में, राइट? और अगर स्मोकिंग इंजूरियस है तो क्या किसी पब्लिक फिगर को वो करना चाहिए? नहीं, दे शुड नॉट डू इट. इसीलिए public figures should be away from smoking because youngsters follow them and smoking is injurious, so they should not be doing it. That's why, yes, that's what I did with hate speech as well. So the first argument is a very strong argument because people, youngsters, follow public figures and they should be very thoughtful about the ads that they choose to do. And that's why so much of hue and cry over Amitabh Bachchan promoting some tobacco brand and other things also. This first argument is a strong argument here. Okay, the answer here is A. So guys, that is all for strong and weak arguments. I wind up my class here, and in the next class, I'm going to bring up a new series which starts tomorrow. Very likely it's going to be a series on reading comprehension, which we haven't done in quite a while. Okay, so I shall see you tomorrow 12:30 again. Make sure you don't miss out on this session. Have a very, very good day, and God bless all of you.